तो देखो एपीआई क्रिएट करने के हाँ भाई, तू कंटिन्यू तो कर। एपीआई को हाँ एपीआई को जो हमें क्रिएट करने के लिए जो सिंपल सेंस से होता है कि हमको सबसे पहले एक कंसोल पेज बनाना पड़ेगा, जो कि हम नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। और इसमें हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वीएस कोड या नोटपैड का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या होता है, अब एपीआईज बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, मैं उनको रीड आउट कर देता हूँ। In the console, open the navigation menu and click developer series। देखो अब यहाँ पे जो steps mention किए गए हैं, ये गूगल क्लाउड्स के बेसिस पे हैं। तो या तो एक एपीआई बनाने का मेथड ये होता है कि हम उसे वीएस कोड या नोटपैड में कोड के थ्रू टाइप करके बना सकते हैं, और एक होता है हम डायरेक्टली गूगल क्लाउड के सर्वर से अपने लिए एक एपीआई बनवाएं। तो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं ये गूगल क्लाउड के थ्रू हैं। तो जैसे इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, ऑन द एपीआई पेज क्लिक एपीआई रिसोर्सेज एंड स्पेसिफाई द नेम। स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेम में होगा कि इसमें जैसे हमें किसी पर्टिकुलर एपीआई का जो नाम रखना है वो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। स्टेप 3 होता है, उसमें एक नीचे ऑप्शन होगा, बटन होगा क्लिक क्रिएट करके। उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई का जो रिसोर्स होगा वो फेच होना चालू हो जाएगा गूगल क्लाउड के अंदर। फिर उसके बाद जब हमारे एपीआई का नेम क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर हमें बैकएंड पे कोड लिखना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर चीज में वो एपीआई वर्क करेगी। और फिर उसके बाद हमें जो लास्ट दो स्टेप्स में जो फिफ्थ स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वो ये है कि अगर हम किसी एपीआई को यूजर मतलब पब्लिकली उसको दिखाएंगे यूजर को, उससे पहले हमको उसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एपीआई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम उसको पब्लिकली डिप्लॉय कर देंगे तो हो सकता है कि जो यूजर का सर्वर है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आए, और इवन जो जिस व्यक्ति ने उसको एपीआई को क्रिएट किया है उसके डेस्कटॉप और सर्वर में इश्यू आएंगे। तो हमें सबसे पहले उसको टेस्टिफाई करना चाहिए, मतलब उसको पहले टेस्ट करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एपीआई सही है या नहीं। और लास्ट जो सिक्स स्टेप है वो बहुत सिंपल है, उसको हमें डिप्लॉय करना होगा, मतलब हम उसको पब्लिकली यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे एपीआई को फेच कर सके। अब है एपीआई की एक कॉल लिमिट होती है जिसके बारे में हम हैं। तो देखो एपीआई कॉल लिमिट ये होता है कि इट इज अ सेट ऑफ मेजर्स put in place to help ensure the stability and performance of an API system. It works by setting limits on how many requests can be made within a certain period of time, usually a few seconds or minutes, and what action can be taken. तो अब एपीआई लिमिट से होती हैं कि देखो नॉर्मली लिमिट, जब हम लोग उस वर्ड को सुनते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो होती है कि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना किसी पर्टिकुलर चीज पे। सिमिलरली एपीआई में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम एपीआई में एक बार में ज्यादा बार रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर हम एक बार में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उस केस में वो पर्टिकुलर एपीआई ब्लॉक हो जाएगी, और वो किसी भी यूजर के यूज करने लायक नहीं बचेगी। इसलिए एपीआई कॉल लिमिट एक फीचर था जो एपीआई में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2010। तो इस फीचर से क्या है कि एपीआई में एक लिमिट लगाई गई कि एक पर्टिकुलर सेकंड्स और मिनट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ही प्रोसेस हो सकती हैं एपीआई में। यानी कि अगर सिंपल सेंस में बोला जाए तो एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ, जैसे एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 1000 रिक्वेस्ट ही एक एपीआई सर्वर एक बार में हैंडल कर पाएगा। और उसके बाद अगर वो 100 and 1000 के अलावा वो बढ़ती है तो उस केस में एपीआई कॉल लिमिट लगेगी, और वो जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट हैं वो एक हमारे क्यू के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। यानी कि एक मिनट के बाद जब वो रिक्वेस्ट ग्रांट होती हैं उसके बाद वो जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो उसके बाद काम में आएंगी, और जो यूजर है उसको तब मिल पाएगी उसकी। तो अब सबसे पहले ये भी जान लो कि एपीआई यूज कौन करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एपीआई देखो
काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि amazon है, गूगल है। ये प्लेटफॉर्म्स एपीआई का काफी यूज कर सकते हैं और करते हैं। सिंपल सेंस में बोले तो जो गूगल है और amazon है, एपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। अब जैसे हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं, गूगल वेदर है, गूगल अर्थ है। तो हम लोग ने कभी ये सोचा है कि आखिर कैसे हम एक क्लिक में गूगल अर्थ से अर्थ के किसी भी लोकेशन में देख सकते हैं, या गूगल मैप जो होता है उसमें हम कोई लोकेशन डालते हैं तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो ट्रैफिक है या वहाँ पे किस तरीके की मॉन्यूमेंट्स है उसकी इमेजेस हमारे तक कैसे पहुंचाता है। तो उसमें गूगल एक एपीआई का यूज करता है। सिमिलरली amazon भी अपनी डिलीवरी सर्विसेज में एपीआई ट्रैकिंग सिस्टम लगाता है, जिसके थ्रू वो यूजर के सर्वर से कनेक्ट करके उसकी डिलीवरी लोकेशन का पता लगाता है और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसका प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो पॉपुलर कंपनीज जैसे amazon और गूगल के अलावा और कंपनीज हैं जो एपीआई को यूज करती हैं। मैंने यहाँ पे गूगल और amazon को मेंशन किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनीज है जो एपीआई करंटली यूज करती हैं। इसके बाद आता है कि अब हमने एपीआई के बारे में काफी लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, तो अब ये जानते हैं कि आखिरकार पहली एपीआई बनाई किसने थी। तो देखो, पहली एपीआई जैसे मैंने पहले बताया था कि एपीआई जो थी वो 1951 में उसका वर्ड आया था, जो कि व्हीलर्स और विल्क्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक में मेंशन किया था। तो 2000 में पहली एपीआई बन के तैयार हुई थी और इसे सेल्स फोर्स कंपनी जो थी, जो कि अभी हम में से काफी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, उसने बनाई थी और उसने इसे 7 फेब को रिलीज किया था एक डेमो कॉन्फ्रेंस के फॉर्म में। मतलब ये थी कि ये एपीआई यूजर के लिए तो बाद में आई थी, लेकिन इसे एक कॉन्फ्रेंस में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे इसकी टेस्टिफाई किया गया था, जो कि अभी हमने एपीआई को क्रिएशन के 5th स्टेप में पढ़ा था। तो इस पर्टिकुलर एपीआई, ये पहली एपीआई थी जो कि यूजर्स को दिखाई गई थी। ठीक है। अब हम आते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो होता है कि एपीआई के बारे में अभी तक हमने बात की है, तो क्या हम एपीआई से मनी भी कमा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, हम एपीआई में एक फीचर आता है मोनेटाइजेशन का। तो जैसे हमने टाइप्स के बारे में बात किए थे, तो उसमें मैंने तुमको सब लोगों को बताया था कि उसमें एक 3 तरीके के नीचे, जो जिसमें एक इवेंट वाली थी, एक पार्टनर की थी और एक ओपन एपीआई थी। तो इन तीन थ्रू हम इवन मनी कमा सकते हैं। और वो सिंपल सेंस ये होता है कि जो मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है जो एपीआई में हम यूज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, जिसमें ये होता है कि हमें 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं ताकि हम चैनल को मोनेटाइज कर सकें। उसी तरीके से एपीआई को भी मोनेटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जिसमें कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि सबसे पहले जो एपीआई है वो एक ट्रस्टेड कंपनी से बनी होनी चाहिए। सेकेंडली, एपीआई जो है वो कॉमन टू यूज होनी चाहिए, मतलब जो यूजर उसको यूज कर रहा है वो उसको इजीली एक्सेसिबल हो। और कॉमन होने का मतलब यह है कि वो कॉमन टॉपिक पे हो। जैसे कि मैंने वेदर एपीआई की बात की थी, तो किसी पर्टिकुलर सिटी के वेदर को के डेटा को फेच करने के लिए कॉमन एपीआई का यूज किया जाता है, जो कि इवन हम मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं उससे। तो ये दो कंडीशंस थी जिसके हम थ्रू हम एपीआई को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब ये पूरी एपीआई के सारे टॉपिक्स थे। अब इंटरव्यू में जो एपीआई के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन किए हैं, और इवन मैंने इन स्लाइड्स में उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है कि एपीआई होता क्या है, तो मैंने उसके बारे में तुमको शुरुआत में ये बताया था कि एपीआई जो होती है वो एक इंटरमीडिएटरी लिंक होती है बिटवीन यूजर एंड वेब सर्वर, जिसमें हम यूजर और वेब सर्वर के बीच में जो डेटा होता है उसके ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली जो है एपीआई की टेस्टिंग क्या होती है,
जिसकी मैंने उसके क्रिएशन में फिफ्थ पॉइंट में बताया था कि एपीआई टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एपीआई को क्रिएट करके बिफोर डिप्लॉइंग इट फॉर द पब्लिक यूज हम उसे टेस्टिफाई करते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर एपीआई इज करेंटली वर्किंग और नॉट। तो ये एक पर्टिकुलर चीज थी जो एपीआई टेस्टिंग में आती है। फिर उसके बाद एपीआई वर्क कैसे करती हैं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि लोग एपीआईज के बारे में जानते तो हैं लेकिन वो एग्जैक्टली काम कैसे करती है वो नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा ये एक फोर्थ क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई। तो ये कुछ कॉमन एपीआईज हैं। इसमें जो एपीआईज मेंशन मैंने की हैं वो जो मैंने पहले एक स्लाइड दिखाई थी उसमें जो एपीआईज थी उनके नाम मेंशन नहीं किए, क्योंकि वो पहले हम दिखा चुके हैं तो उनको दिखाने को कोई फायदा नहीं था। इसलिए कुछ और एपीआईज हैं जो कि सुयस। रिसेंटली में मिल जाएंगी। सुयस भाई, एक तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि जब मीटिंग अगर ओवर हो हाँ, जाए तो तुम लोग फिर से ज्वाइन हो जाना, मैं सेम मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। ठीक ठीक ठीक। और ये फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है जो कि एपीआईज में आता है, एपीआई प्रोटोकॉल्स का। जो एपीआई टेस्टिंग में हम यूज करते हैं जिसमें एच टी टी पी मोस्ट कॉमन है, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है जो कि सभी लोग आई थिंक जानते ही होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था रेस्ट, सोप, जेएमएस, यूडीडीआई, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स टाइप्स हैं एपीआईज के। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो और इनके आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो अगर किसी को उनके आंसर्स का रेफरेंस लेना है तो वो इससे ले सकते हैं। रुद्रांश। आईएसएसपी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लो सुयस से, अगर कोई कुछ पूछना चाहे। सुयश, अभी कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हो कि एपीआई से कैसे डेटा फेच करेंगे? एक बार दोबारा बोलना, तुम क्या कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था। मतलब जैसे किसी साइट से हम लोग मतलब डेटा लेंगे तो वो एक बार तुम लाइव करके दिखा सकते हो, वर्क करके, मतलब कोड पे, अगर उस लेवल तक गए हो तो। अभी मैंने असल में लिंकिंग एपीआईज की देखी नहीं है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि एक ओपन एपीआई करके है, वेदर एपीआई है, जिसमें मुझे स्टेप्स मालूम है कि उसमें एक जो प्रोफाइल सेक्शन होता है उसमें एक पर्टिकुलर टैब होता है जिसमें जहाँ पे हमें एपीआई फेच का ऑप्शन मिलता है। उसमें एक एपीआई कोड होता है, हम उसे बस कॉपी करना होता है हमें। और जिस भी जैसे हम कोई वेदर एप्लीकेशन बना रहे हैं या सिंपल सेंस में बोले तो अगर हमें एक वेबसाइट बनानी जिसमें हम किसी भी सिटी का वेदर फैच कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, या वहाँ सनी है या वहाँ रेन हो रही है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम ओपन एपीआई एक सोर्स है, वहाँ से एपीआई के एक नंबर होता है जो कि हर एपीआई का अलग अलग नंबर होता है। वो डिपेंड करता है, एपीआई नंबर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उस वो रजिस्टर एपीआई है कि नहीं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड एपीआईज होती हैं वो बड़ी नंबर्स की होती हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा जाता है। तो अभी इम्प्लीमेंटेशन अगर देखना है तो फिर मैं उसको नेक्स्ट जो हमारी होगी मैं उसमें दिखा सकता हूँ, अभी एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम होगा। ओके भाई, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या यश, पूछना? हेलो। हाँ बोल। तो एपीआई में मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं उन सब का मतलब जो डेटा होता है वो सब कलेक्ट होता है, बेसिकली ये सब भी होता है। हाँ, एपीआईज का काम ये होता है कि जैसे मैंने वो वेदर वाला बताया था ना, तो हाँ हाँ। जैसे हम कानपुर में हैं, तो कानपुर में जैसे आज वेदर सनी था, तो हम्म। एपीआई का काम ये होता है कि जैसे जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर को देखता है, वो हम्म। उस पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर, जो रेनफॉल पैटर्न है, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन हम्म। रेट, इसका विंड हम्म। स्पीड, इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करता है अपने सर्वर पे, और अच्छा सर्वर अच्छा। के ही थ्रू एपीआई जनरेट होती हैं। तो जैसे कि मुझे बॉम्बे का वेदर के बारे में पता करना है, तो मैं सिंपली हाँ। ओपन जो एपीआई होता है उस पे जाऊंगा,
बॉम्बे की जो लोकेशन है उसको सर्च करूंगा, और हर एक सिटी का एक सेपरेट एपीआई होता है, मैं उसको फेच ओके। करूंगा। और क्योंकि एपीआई जो फेच होगा वो उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की, सिटी की जो ऑफिशियल वेदर वेबसाइट होती है उससे फेच होता है, और उसमें जो हम्म। करंट डेटा होता है वो अवेलेबल होता है। तो उस एपीआई के थ्रू जो मेरे सिस्टम में डेटा आएगा वो वहाँ की पर्टिकुलर जो वेदर वेबसाइट है उसका करंट डेटा आएगा। तो सिंपल फॉर्म में अच्छा। अगर हम बोलें तो हम एक लिंक ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्वर से अपने कंप्यूटर में, एक हाँ, वायर के फॉर्म में, बट वायरलेस फॉर्म में एपीआई के थ्रू, बस ये मान के चलो। तो इसमें डेटा लीक का मतलब चांसेस कम ही होते हैं एपीआई में, मोस्टली जो भी डेटा होता है मतलब ये सिक्योर्ड होता ये है प्रॉपर्ली। बिल्कुल, इसमें डेटा लीक के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था ना, एपीआई जो नंबर्स होते हैं, एपीआई एक नंबर के फॉर्म में होती है। हाँ तो हाँ। जैसे अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हम्म। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। और एक इसमें एक फीचर ये होता है कि एक एपीआई नंबर एक बार ही जनरेट होगा, उसके बाद वो नहीं होता है सिंपल फॉर्म में। यूनिक। जैसे ओटीपी होता है, ओटीपी हाँ। एक बार हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। नहीं। नहीं, तो हाँ जैसे मैं बरोबर। को लिंक करूंगा, हाँ। और तो वो उतनी ही देर तक मेरे सिस्टम में रन करेगी जब तक मेरे पास उस सर्वर का कनेक्शन होगा। अच्छा मोस्ट अच्छा। प्रॉब्ली 24 आवर्स तक का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम एक एपीआई सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। टाइम ड्यूरेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हमने, जैसे मैंने मोनेटाइजेशन वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि उसमें हम हाँ मनी हाँ। अर्न कर सकते हैं। तो उस हम्म। पर्टिकुलर प्रोसेस में हम अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट जो सर्वर है उसको हम पेमेंट दे दें, तो वो उस पर्टिकुलर हम्म। टाइम ड्यूरेशन को भी हम बढ़ा सकते हैं। वो जैसे कि अच्छा। अब हमें करना है कि वो लाइफ टाइम जाए, तो हमें एक पर्टिकुलर बॉन्ड साइन करना होगा जिसमें हमें मेंशन हाँ। करना है कि हम इतने अमाउंट उनको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पे करते जाएंगे, हम्म। उस पर्टिकुलर क्या है कि परमानेंट एक्सेस दे देंगे। ओके। ठीक है। थैंक यू। यही पूछना था बस। ओके। तो गाइज अब प्रेजेंटेशन कौन देगा, मैं दूं या कोई और देगा? अब है, तुम दोगे कि हम दे? मैं स्टार्ट करूँ या आप तुम कर रहे हो बताओ। काम करते हैं कि अब है तू ही स्टार्ट कर अभी तो, क्योंकि मेरी बैटरी भी जा रही है, मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ, तू स्टार्ट कर। अब है 1 सेकंड वेट कर यार, क्योंकि क्या बोलते हैं, टाइम हो रहा है, ओवर ओवर हो रहा है ये, मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। विजिबल है। हाँ भाई, विजिबल है, विजिबल। हेलो, विजुअल है भाई। So, so I was telling you about the HTTP request methods. So this is one of the most important questions that comes in interviews, that interview rounds, that how it is connected or interrelated with the HTTP protocol. That how the protocol has been related to the HTTP REST support. That means HTTP request method, how it interrelated or how it supports the REST support. Actually, there is an acronym known as, I've told you the CRUD acronym: create, read, update, and delete. So the requests have been made like this. That first it comes about the patch. Uh, First it comes about the patch. Then there is, you can say it's a patch, then post, then delete. As usual, there is delete is always there. So delete is has same. So patch, post, delete, and put. Uh, okay.
these are the terms that update, the put updates. Put is equals to, is similar to update. So the protocol put is updating the rest support. So it is so put is equals to update, while the delete always deletes the API the unnecessary API requests. Okay. Now coming towards post and the coming towards the post and patch always reads and patch always read and post create the protocol. So you can so this is one of the most important questions from my point of view also. So please have this idea again and again while preparing for any interviews. So one additional slide is that exploring an API. So while exploring an API, that how do you explore an API? Okay, so there is a certain method, certain criteria, certain steps that you explore an API. So what more about an API you can say? So there is one practical demonstration that, for example, if you want to fetch any API of any website or any application, I'm taking an example of Spotify. Spotify, one of the most popular music or some music application. So Spotify, you can click to the Spotify. You can type there the Spotify API. Spotify, while the Spotify API has been coming to you, there is one uh, uh, button known as, or you can say you will getting one instruction of documents. So or and community. So clicking about a document, you can move towards any of the documents and you can fetch according to you that what kind of application you want to build with using that API. So while doing that the whole method, you can execute the central request to the client server. So by copying those tests, you can able to create your own responsive API. But the most important thing is API works upon the JSON JavaScript object notation. The whole web of an API works upon JavaScript object notation JSON. So JS1 is an important concept. In context with an API, it is also used in a React also. So React is I'm not moving towards React, but yes, APIs has been implemented in React also. That after applying the whole how making the whole project the one or the way you will deploy it there. So there's a context with API. This is another concept, but I'm just telling you additionally. So there also you should have the good knowledge of JSO and JavaScript object notation. So so concluding my slide with some these question and answers, that what are the differences between the post and put methods, what difference between API and web services, and CRUD. So CRUD I related to API. So as you can say, my previous slide also, there was question what HTTP request the support, REST support. So it is some similar to that. So, the answer was again fluid. So it was the similar to that. That create, read, update, delete. So where there you get get these methods, post and put methods. Okay, so put method is for updation, put method is for reading, and patch is for creating, and delete always deletes. So what are the differences between API and web services? I've explained in my previous slides that what the differences of API and web services. That API, again I'm summarizing it at that API is an application based interface. That API always API is an application-based interface, or you can say it is a style of communication. But websites, but web is the normal websites that uses XML languages, JS1 notations, and all. So the last point that I will be saying about an API is that every API, that every website is an API, but every API is not a web. It's not a web. So if you have any question and answers or queries, you can My last question. ask me. What? Last What wala is kaun sa? CRUD? What is CRUD as it relates to an Yes, API? yes. What is CRUD? CR unit as it relates to an API. So this is the very simple question and very asked questions also. It is in interviews. That CRUD is an acronym.
it's not any term related to any technical term. No, it's not any technical term. It's just an acronym. So again, I'm defining this, that C is for creating, R is for reading, U is for updating, and D is for deleting as well. The way it relates to an API, that you can create you can create it by with the help of post methods. That, see, in the question number one, it is the differences between post and post methods. So this is the difference. It is see, these three questions are interconnected to each other. The first question and third question is interconnected to each other. That where the patch put is also known as a patch. So patch always you can say update. It is known as updation. It's used for updation. Delete is for deleting an API, then any API service if you do not want it, or you can say a temporary, or it's an unnecessary file over there. And talking about the C and R, that is creating and reading. It reads the API with the help of post method, and C and it creates the whole API architecture. So again, if you have any question, you can ask again. डन भाई डन, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। अब है कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ। केवल एक बार अगर भाई रेस्टफुल एपीआई का एक बार दोबारा से बताओ। Yeah, sure. Actually, REST API एक normal, it is a normal API. Actually, REST what happens when web developers are using this API tool or API architecture, were facing many problems. For actually, see, there are many complex codes, as you were discussing in your presentation, about webpacks and all those things. So the codes were getting you can say compressed. So with the help of webpacks, as you told there. So the same is for RESTful API. It is providing actually a REST. You can say, you can understand like this, that it is initially they are providing a REST on while communication. So there is a very complex network there. So they work on a very complex network like the internet, and the internet is obviously a conference network. So it is an architecture. So they just compromise the conditions where and they just allow and ask and they guide that how API should work. So they are initially created to the developer that manage communication or network communication. They make the work of web developers in a very synchronized manner, in an easy manner. So that is the work of a RESTful API. So RESTful API, one thing more, the RESTful API is a part of a web API. It's a part of web. So as I told you, that API has been divided into another four categories. See, there are four categories and a four categories. So this is a ratio of 4:4. So there were four categories of composite or internal, and there were some. I will be discussing in a later slide or in future. And the another four categories was this, that is important, was web APIs and websites and all those. On these four parts were there. So the RESTful is a part of web. So while you are working on any web API or working on any websites, or even if you are working on web API, so you have to use the part of RESTful API. So with the help of RESTful API, your the code of API code gets compromised. The complexity gets reduces very efficiently, and you will be practical when you are practical demonstrating all those things. You will be finding it in a very in a very efficient manner. Anything else? या ठीक है भाई, समझ गया। भाई यार पीडीएफ सबको शेयर कर देना उसी वाले ग्रुप में, जो अपना वो वाला नहीं है, सोर्स कंटेंट वाला ग्रुप, उसमें। तू एपीआई का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है क्या? बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, इट्स नॉट अ वेरी बिग, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मोर डीप, नॉट डीपर, बट जस्ट but this is the way I was saying, that how the way we this is the part of exploring an API. So this is how you can explore the whole API with the help of documentation, API reference. You can say, if you want to log into dashboard, but if you want to create an app using an
username web API, you can create an app with this. The JavaScript code, you can even copy the JavaScript code. It contains JavaScript code, JS1 codes, and all those codes. So if you want those things, you can clear it by. And for your so this is just for reference. If you want to establish, actually API gives us this leniency that from copying one API from any other site, we can develop more APIs from if you are to the customer oriented or the user oriented. So this is the benefits of API. But yes, the one limitation of API is that it is not so security for the security base. It is not so authenticated and all those. That was the ओके, तू स्क्रीन वो बंद कर ले, स्क्रीन शेयर। okay. तो भाई यार, 2-3 कंक्लूजन है जो मैंने अभी सोचा है कि अगर देख और मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। एक सेकेंड, वो क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन ऑन करो पहले। ऑन कर दिया। तो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज बैकपैक। So let us start कि what is backpack and why do we need this backpack? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर if we have a very large project, we have a large project, that means we have so many assets in that project, so many portions, so many small part or modules of that project that all together making that project functional. So these all assets you can see on your screen can be represented with various file extensions such as JS, CSS, PNG and all that. So when our project is very large, it is quite difficult to manage all these modules. So to solve this problem, we are using a backpack technology. So to define backpack, we can say it is a module bundler. Module bundler means the small portions of the entire big project can be bundled, can be grouped in very small portions so that they can be used as per the requirement. The next one is the asset compiler. It is also used to uh, to collect all the modules in a very organized manner. Backpack can understand only JS and the JSON format, and we will talk about that what we can do to include all other files also. So this is the backpack, and the core concepts that are covered in the backpack are entry, output, loaders, plugin, mode. And this graph is very interesting. Everybody will get to know about this very clearly towards the end of this meeting. The first one is the entry point. So Backpack is basically going to create this kind of a graph for all the modules that we are using in a big project. The small nodes will be the small portion or the module of the project. And this is how the entire project will look like if we try to visualize it. So the first one is the entry. Entry is the starting node from where the Backpack will begin to execute. This will be the starting portion of our entire project. And you can see like it will generate the dependency graph from here itself. By default, it is index.js file. The next one is output. We can also set in what kind of file do we want our output. For example, you can see on a screen, we have given output as my first backpack.bundle.js format. So all our code, all our small modules will be bundled and a single file will be created with a name called as my first backpack.bundle.js. So this is the output feature of it. The next one is a loader. As I have told you earlier that Backpack can understand only JS and JSON file. So all other files such as HTML file, CSS file can be uh, converted or can be utilized by Backpack by the use of the loaders. So loaders, you can see I have used a module test and use. So in the test, I have written .txt. So that all the txt files will use the raw loader
raw loader to be understood by the backpack. This is the concept of the loader. Next one is the plugin. Plugin is used to organize or synchronize all these small modules. So this is plus bundle optimization. Plugin is used for the bundle optimization. Towards the end of the code, you can see like plugins, HTML backpack plugin. Uh, we have we have used this plugin here, and then we have mode. In backpack, we can use two mode. The first one is development, and second is production. By default, it is set to production mode. And now comes the important slide, like why do we even need backpack? So it will do so many things. Let's talk about them one by one. The first one is it will care about the performance and load time. So when we have a very big application, we have so many things in it. So it is going to organize them. It is going to bundle them into small portions, and it will link all of them in a most synchronized way. And it will help in readability and mintability of the project. For example, if I talk about few of the brilliant features of it, the first one is hot module replacement. Hot module replacement refers to specific portions of the entire big project that are used again and again. So it will identify what are those hot spot zones in our entire project, and that will be linked very closer so that our loading time and utilization of CPU and memory is very efficient. The next one is lazy loading. Lazy loading refers to a phenomena where not the entire files are rendered at the same time, only the one that we are trying to see on the screen will be loaded. The next one is bundle splitting. We are not taking every code in a very big file. We are splitting them into small portions so that only the relevant portions are sent to the browser. Then we have hashing and source map also. So backpack, so here comes the end of my meeting. Towards the end, I would just say, to summarize all, Backpack is going to use these five things that are entry point. It will generate an output file. It will be a single point. It will comprise of all entire things that you have. For example, these files, and it will make use of loaders to convert files that are not JS or not in the JSON format, and then it will use plugin for optimization of them. And mode we can select based on our purpose, for example or production, or this one, or the development one. So backpack can be summarized with the help of this image. There will be a starting point, that is the entry, and every node is referring to a small portion of that big project. And here comes the end of my meeting. Thank you very much. रुद्रांश भाई, कोई कमेंट? भाई अबे कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ा सा करके दिखाएगा? हाँ चलो, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ मैं। देखो, इसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन या कोड को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाया था, ये जो बैकपैक होता है, जैसे हम लोगों ने कोड लिखा है, तो कोड में जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल अपनी बनाई थी, जो कि नॉर्मल जो हम लोग वेब डेव में बनाते हैं। तो मैंने जैसे ये बनाई है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर करा, उसे आउटपुट किया। मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया, इतना बड़ा नेम ले लिया। तो ये सब हम लोग सिस्टम में ले लिया, रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है। लेकिन जब हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्पेस यूज होती है। तो ये बंडल डॉट जेएस में मेरा आउटपुट आया है। तो इसमें उसका नेम क्या है, केवल ओ दे दिया गया है, मतलब उसका नेम को शॉर्ट कर दिया, जितना भी वाइट स्पेस था वो सब हटा दिया गया है। और पूरा 8-9 लाइन का कोड एक लाइन में ही कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि कोड को उन्होंने श्रिंक कर दिया है जितना कि हो सकता था। तो इससे मेमोरी सेव होती है, और कई सारी चीजें होती हैं। तो मेन इसका यही था। बाकी अगर जो हम लोगों ने बैकपैक वाला कोड देखा था, वो अगर हम लोग दोबारा देखना चाहें, तो पहला मॉड्यूल होता है एंट्री पॉइंट का, जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से ही करते हैं। तो ये मेरा इंडेक्स एंट्री पॉइंट है। फिर हम लोग जैसे जो जेएस या जेसन में नहीं है, उसके लिए दूसरी फाइल है, तो उसके लिए हम कई सारे लोडर्स यूज कर सकते हैं।
जैसे अगर मेरे पास एसवीजी इमेज फॉर्मेट है तो हम लोग एसवीजी इनलाइन लोडर का यूज कर सकते हैं। सीएसएस फॉर्मेट है तो हम लोग स्टाइल लोडर का यूज कर सकते हैं, या फिर सीएसएस लोडर का यूज कर सकते हैं। जेएस फाइल के लिए हम लोग बेवल लोडर का यूज करते हैं। और आउटपुट मैंने बंडल डॉट जेएस में चाहिए था, तो वो मैंने दिखाया था कि बंडल डॉट जेएस कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। इसमें इंडेक्स डॉट जेएस जो था वो देखो एक लाइन में ही पूरा उन्होंने समराइज कर दिया। तो इस तरीके से बैकपैक यूज होता है। और प्लगइन हम लोगों ने एचटीएमएल का यूज करा था। बस इतना ही है बैकपैक में, मैंने तो इतना ही पढ़ा है। ओके ओके, बिल्कुल यार। आगे मैं देता हूँ प्रेजेंटेशन अपनी। यार मेरी बेसिकली प्रेजेंटेशन बोलूँ या हो सकता है कि मैं थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके ज्यादा दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन मेरी उतनी अच्छे से बनी हुई नहीं है, मतलब 2-3 स्लाइड्स कहीं पे हैं और 2-3 स्लाइड्स कहीं पे, तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके ज्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ। गाइस 1 मिनट जरा वेट करना यार। गाइस स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है भाई। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद गिट एंड गिटहब। तो गिट एंड गिटहब में बेसिकली गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है। गिट बेसिकली एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइस में, लोकली लोकली डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। जैसे हम लोग कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट फाइल स्टोर करते हैं। उसी तरीके गिट भी एक वर्क करता है जिसकी हेल्प से हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कुछ रिपोजिटरीज बना करके, रिपोजिटरी का दूसरा मतलब होता है फोल्डर, जिसमें हम लोग अपने कुछ फोल्डर में कुछ फाइल्स स्टोर कर सकते हैं इसकी हेल्प से, गिट की हेल्प से। और गिटहब क्या होता है? गिटहब एक बेसिकली इंटरनेट से चलने वाला एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से मेनी जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे हम लोग भी एक डेवलपर है, तो अगर एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो हम लोग साथ में वर्क कर सकते हैं थ्रू गिटहब। लेकिन गिटहब के सिर्फ ओनली यही यूज नहीं है, गिटहब का यूज वेबसाइट मेकिंग के लिए किया जाता है, गिटहब का यूज
बहुत सारी और भी चीजों में किया जाता है जो कि डेवलपर्स को काफी हेल्पफुल होती है। तो अब मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ लाइव जाके। गाइस, स्क्रीन विजिबल है? गाइस, स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है यार, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। देख, सबसे पहले पहला कमांड जो हम लोग सीखते हैं वो है PWD। विजिबल है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप किस फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि यूजर्स के बगल में। समझ में आया इतना? अब यहां तक कोई दिक्कत? भाई दूसरा कमांड हम लोग पढ़ते हैं MKDIR। MKDIR की हेल्प से हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने MKDIR.न्यू फोल्डर लिखा, न्यू फोल्डर 1। इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब अगर हमको इसको देखना है कि ये फोल्डर है कहाँ पे, तो हम लोग दो कमांड का यूज करेंगे, कि स्टार्ट डॉट, जैसे ही कि हम लोगों ने, तो एक अभी तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये विजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर स्टार डॉट का मतलब साथ में करोगे ना तुम लोग, तो ये विजिबल हो जाएगा कि वही फोल्डर अपने आप स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा ये। और एक दूसरा कमांड होता है एक्सप्लोरर डॉट। इसकी हेल्प से भी सेम वर्क होता है कि जहां पे भी आपका फाइल होगा वो खुल के आ जाएगी फाइल। अब दूसरी चौथी कमांड होती है CD। CD यानी कि मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब हमको जाना है अपने न्यू फोल्डर 1 पे, तो हम लोग जाते हैं न्यू फोल्डर 1। देख, अब फोल्डर चेंज हो गया है, यानी कि न्यू फोल्डर पे हम लोग आ गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अपनी फाइल्स को लिस्ट करना है कि इस फोल्डर में क्या क्या अवेलेबल है। तो हम लोग LS कमांड का यूज करेंगे, LSL से की हेल्प से हम लोग उन फाइलों को लिस्ट कर पाएंगे जो कि इसके अंदर है। अभी ये वैसे एम्प्टी है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर है क्या। देख, लिखा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मतलब इसमें अभी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसका हम लोग पाथ देखते हैं कि किस पाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अभी देख, ये न्यू फोल्डर पे आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग जो करेंटली वर्क कर रहा है वो किस पे वर्क कर रहा है, न्यू फोल्डर 1 पे। भाई मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब है? हेलो। भाई स्क्रीन शेयर हो रही है, समझ में आ रहा है अभी तक जितना मैंने बताया? आवाज सुनाई दे रही, सब कुछ क्लियर है? मे, मेरे में स्क्रीन नहीं आ रही हुई। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है? अच्छा, एक सेकंड यार, मुझे लगता है स्क्रीन रिकॉर्ड। नहीं आ रही तुम्हारी। क्या? स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है यार? चल तो इसी पर आ। एक सेकंड। और वॉइस लैग हो रही है। आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है यार। तुम लोगों को बताना चाहिए था। अच्छा देखो, मेरा नेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ। वेदांत, तुम्हारा नेट सही चल रहा है ना? नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, एक सेकंड रुकना यार, मैं ट्राई करता हूँ दूसरा।
नेट। भाई मेरी भी कोई कर लेता यार। अब विजुअल है पीपीटी। हाँ पीपीटी विजिबल है। So, so today I'm going to start about API. API, although Shuyesh has discussed about a lot on API, but my presentation on API is more inclined towards interview, or how the interview, वेदांत or वेदांत what वेदांत kind of questions, स्क्रीन पे जरा क्लिक करो, ये what इंट्रो वाला अपना अपने आप हट जाएगा। स्क्रीन पे क्लिक करो, उस पीपीटी के फोटो पे क्लिक करो। बस, अरे अरे जूम हो गया। हाँ थोड़ा और जूम, थोड़ा कम कर, जूम ज्यादा है। हाँ थोड़ा और कम, बस 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 बस। कंटिन्यू कंटिन्यू, बस कंटिन्यू। so continue my words. Actually, I was telling you about it. Suresh has already discussed about the API. But my presentation for an API is more inclined towards an interview. That how the interviewer, or what kind of questions they raise, or what concepts they ask you about for an API. So API, everyone knows about an API is known as Application Programming Interface. It's majorly known as popular. It's a popular, or it's a standard full form is Application Programming Interface. So defining an API. So definition about an API considers that how one language has been translated to the another language. For example, if someone is knowing about English and someone is talking in Spanish, if someone is talking in Spanish and someone is talking in German, so the mediator language that has been known as is can be in English. So that is the language, or the mediator language, or the middleman is is a work of an API. So API works as a translator for the backend languages on our front-end languages. There are two kinds of, because when we write the code in backend, and while we write in the code on the front end. So because the user front-end developer has implemented its front-end code, the back-end developer has implemented its back-end code. But how to link those codes, how to command those codes? For example, they both are they neither front-end code is understanding the back-end code, or the back-end code is understanding the front-end code, and both of them are unknown to each other. To to form a communication link, or the communication channel between the two, we have introduced the concept of APIs. So API has so API is also used in a DBMS, database management system. Although we are not discussing more about DBMS, but API is also used in DBMS. The most standard example of an API is that when we use our flight tickets on websites, we there is an API. So API also forms a key known as an API key. So API key authenticates the user data from the database, and it just rectifies the actual user from the website, and it connects the whole channel or link, or share the data uh, immediately. So this is what the API says, or this is what an API is. So talking about remote API, actually remote API is nothing. It can be, you can access from your home itself. A remote API has been built both for the developers as well as the customers. The customers can also access the remote API. The developers can also help access the remote API. And remote API is a virtual concept that builds the scalability wells according to the user. So it helps a lot more to the people, and it reduces the complexity. For example, everyone can access from their homes or from their from their place, and if they want to build any site, or they want to uh, connect any site, they can take the help from your remote APIs. So there is one more this one more part of a remote API, that is third party API. Now, what are third-party APIs? Third-party APIs are the APIs, for example, your YouTube's. The real life example is YouTube's.
your Facebooks, and your Twitter. What YouTube's does it YouTube's displays it generates the algorithm. It generates the algorithm of you that you can by which you can access the videos or any other or the songs, whatever you want to whatever the feature you want to access, you can access this very in very efficient manner. So and the same applies for the Facebook. The websites of what Facebook does, they make you their Facebook post visible from any user from any part of the world. And same goes for Twitter. Twitter even Twitter is a you can easily access access the tweets of a user. So all those words that these all these three applications that we are knowing about Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, uh, and YouTube's has been implemented. Whatever we are saying is has been implemented with the help of APIs. If we and although this the word is no specific word that defines them as party API. So the third party API is more important to consolidate that you should know. So it is a global platform. So remote API is concluding the remote API. I will be saying that it is a global platform that is accessing the user from from the database, and it can implement and in very smoothly. Now, what is the working of a web? See, working of a web, as I've told you that my presentation is more inclined towards the interview part. Actually, in interview questions, they might ask you or consider you about the working of a web, that how the web works or how the working of a web occurs, or what is the functioning of the web. So it's not a actually huge concept, but actually it talks about the how the HTTP request has been connected and what kind of messages they show you. So actually there are three kinds of error messages. Actually there are three kinds of messages, not error messages, the messages. A hypertext type protocol that is gives you 200, 300, and 400. So 200, if there is a message showing you that 200, it means the your request has been successful from the protocol. While it is showing 300, it is implementing that it has been successful, but it is a bad request. That means it is not has been fetched successfully. And while coming towards the 400, till the 500, it has been damaged. I mean, it must be showing you the error messages. You have seen that HTTP 404, it shows the error message, or they are showing that you cannot reach to this site, and the error has been occurred for whatsoever reason. Either the site is not the website has not been authenticated, or the website your internet connections, or many problems have been there. So the working of a web actually also introduces the concept of websites and a web API. So it is a confusing concept. In interviews, they ask you what's the can you please demonstrate? Can you please differentiate the difference between web APIs and the websites? So web APIs are the part in which they consider you. Web APIs are the actual APIs, and websites is the functioning of a normal web engine. For example, when you're searching something on your internet, so or you're doing internet surfing, then there's a role of obviously you must be surfing on websites, but the role of fetching those informations and connecting those links, actually you are fetching an information simply to the you are asking your Google to simply give you the information. But how this information has been interconnected, and specific information you are connecting, you are authenticating, or you want to fetch, and the authenticated information has been fetched to you. So that is the work of a web API. So the major difference, or you can is say that every website has an API, but has a web API, but every web API is not a website. So uh, this is a very important you can say sentence. I
I'm repeating it again, that every website has a web API, but every web API is not a website. So in web websites you can access the web API, but in on if you want to access towards the web API, you cannot find the websites inside it. The web API is a style of communication. Okay, it's a style of communication. Although in website there are languages known as HTML, XML languages have been written in it, but web API is a simple it is a simple style of communication. It's a style of communication that is asked by the user. So it is a style of communication, nothing else. So one thing more I want to tell you. So there are many other differences also. But the one thing more I want to tell you, for example, if you are building any weather forecasting app, so weather forecasting app is a uh, you want you there you need an API. So what the role of an API in the weather forecasting app? They just fetch you the information of what kind of weather is there, or how much degree, or how much what is the temperature, actual temperature. So although we cannot deploy our own satellite, because it is not possible for us to deploy our own satellite on the cost basis, on the implementation basis, and send it to the atmosphere of the atmosphere or the solar system. So with the help of these APIs, the Google that the information that is being provided by the Meteorological Department of India to the Google. So API is fetching the information from the Google, simple information, whatever the information is, X temperature, Y temperature, Z temperature is there. So and they are implemented towards connecting towards your, or communicating and forming a communicating channel towards your weather forecasting app. So this is a more this is the working of a web, or you can say a web API. Now moving towards RESTful API. So what a RESTful API? As you can see, the perform the presentational state transfer it is software architecture. Actually, REST was created to for developers. Actually, there are many complex actions. There were many complex actions while coding but that cannot be accessed so easily. So that was the reason the RESTful API was have been discovered. Uh, so the RESTful API is a sub concept of web APIs. So RESTful APIs have been inherited from web APIs. So actually, web APIs have been categorized into many categories: composite, or you can say uh, uh, internal, and so like this. There are many categories of API, and and they are differentiated into two kinds of categories. And the other kind of categories comes into the web APIs, or all those things. So this so AP and SOAP and RESTful are the kind of one APIs. So so SOAP is known as simple object application protocol. This is what the SOAP is. So, but in the interviews, they will might be asking you about the RESTful API. RESTful API is most important and most popular. So you should know how the RESTful APIs works, or how you create the RESTful APIs. So, but the benefits of RESTful API is that it is very simple to use. It reduces the complexity of API codes to the user. APIs, there is an API code, and so but while using the this RESTful feature, the complexity of code has been reduced a lot. So again, as I told you earlier, that there are some uh, question and answers. These were the question and answer I've explained you. I've explained you on my previous slide. So again, what's an API? In my slide number 1, you can वेदांत see वेदांत थोड़ा समराइज I've कर दे भाई, थोड़ा समराइज कर दे, क्योंकि मीटिंग 2 मिनट चलेगी, उसके बाद एंड हो जाएगी. So okay, so what's an API? It is in the slide number 1. You can read out the definition over here. The standard definition has been given over there. What's a REST API? Again, I've explained you this right now. So benefits of RESTful web services: it helps the developers to develop the sites efficiently. The most important question here is what HTTP request makes this does REST support. So REST support the
CRUD. There's an acronym. Acronym is CRUD. CRUD. CRUD is acronym over there. CRUD, that stands for uh, read, update, and delete. So how the HTTP protocol has been related, or you can say it has been, you can say, interconnected. Actually, there's one more acronym, you can say, that is uh, patch, uh, patch, post, and patch, post, delete, and put. So this is the way that they have been interconnected. So where the put is for updation. For you want to update some methods, there we use put. Delete, we want to delete an API request for their delete. And गाइस similar, गाइस गाइस and so and अभी मैं मीटिंग अपडेट करूंगा, तो सब लोग ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा डिस्कशन है, उसके बाद फिर मीटिंग एंड करेंगे। हाँ, तू कंटिन्यू कर भाई। so I was saying that there's an acronym known as CRUD, CRUD, create, read, update, and delete. Create, read, update, and delete. So the